Assalamu alaikum and good evening, Pakistan. This is Faisal Kapadia and with me is Awab Balvi for Out of Bounds. And today we are going to discuss the innovation lab that's taking place in Islamabad. A very good effort, but I have a few questions regarding that. So, Awab, why don't you tell us what happened first of all? Kaisa tha? Innovation Lab was held a 3-day conference in Islamabad where Bytes for All and Internews. What is Bytes for All? Bytes for All is an NGO, a digital NGO that is working to a digital NGO. Digital in this domain of digital activism and etc. So in case they and Internews were the host of the conference. They invited about 6 international people, जिसमें Ushahidi, Frontline SMS, Mapbox, and about open source technology. Open source technology. उनके technologists को बुलाया. Flew in from the Washington, flew in from Malaysia, Thailand, either side, and they came and actually taught about 60 or 50 people who were there from Pakistan. Flew me in, flew people in from Karachi. Yeah, तो सुना है मैंने married में ठहरे हैं बड़ी. Not everyone. I was quite fortunate. अच्छा ये इस पे बात हो. Why not everybody in married? Agreed. जवाब तो देने पड़ेंगे. आगे हाँ. ये रात भर हमारी सुबह 4 बजे तक हम लड़ते रहे हैं. तो अब वही जब हम थोड़ा सा टेम डाउन होकर गुस्सा निकल चुका है. इसका भी मेरा भी. तो अब थोड़ा सा हम. अच्छा नहीं मेरा मैं please. अच्छा तो initially the first day they sat around, they exposed all of us to all the technologies that were there. अच्छा groups went around in circles and हर group का resource person would explain कि ये tool कितना इस्तेमाल होता है. Then we broke off. They had randomly assigned groups, people in different groups, जिसमें उन्हें technologists को 2-3, एक graphic designer, एक marketing, एक NGO group, इस तरह से 7-8 लोगों का clumps बना दिए थे. When they sat down, they said कि भाई these are the tools you have. You can create more tools and make more tools, but you decide what project you'd like to create in three days. Develop करो, conceptualize करो first day, second day develop करो, final करो, and at the end of the day, at the end of the session you present it. अच्छा ये सारा कुछ करा के तो the collaborative ऐसा even in our group we went through a long list of 10 projects जो हमने brainstorming की करते एक project पर. तुम्हारे ग्रुप में कौन था? मेरे ग्रुप में एक there was an Australian Rachel who was there from Internews. There were other people who जिनके नाम भी तुम्हें याद नहीं है. नहीं नाम याद है. Ali Gol and Abdullah from Afghanistan. There were a lot of other people. I mean, but as far as the interaction मैं आपको जो बता रहा था, it can be taken on. The effort was good. I believe the effort was very good because I think you need to cluster together people to start brainstorming on different projects that Pakistan ज़रूरत थी. We were able to create 7 to 8 projects. There were 7 groups. एक छोटा सा 8वां project भी बन गया था छोटा सा. And they made this a definite. I mean, we had a vote awareness campaign. We had a disaster relief situation, a sexual harassment वाला issue, safety, domestic abuse भी था. 4-5 तो पढ़े थे. 4-5 पढ़े and there were total 7. एक Imtiaz was also there. Shoaib was there. Uruzia was there. So they were good. It was a fun 3 days. I totally enjoyed it and I think everyone enjoyed it. But वो जो geekiness का जो geek fest, that was what made it a perfect situation. What they're giving you what tools over there? I mean, as far as with their you just came with your laptops? No, laptops सबके मेरा तो laptop आजकल खराब पड़ा है तो I'm. आप तो Dell लेके गए हो तो मैंने देखा. नहीं Dell नहीं iPad वो Dell because I was borrowing other people's laptops to do my stuff. We had the tools that were there, open source tools. You could naturally think out. But tools किस form में थे? There were terminals there that you could. No. या आप शायद आपने computer download करें, host करें, find a place to host it. MySQL के servers आप कहीं अपने करें. It was all your own. Nothing was the fact कि उनकी तरफ से कोई provide नहीं था. But ये ज़रूर था the resource person का आप दिमाग खा सकते थे. I mean in effect हमारा जो project था जिसमें मेरा वोट मेरी ताकत जो था हमने किया था उसमें मुस्कुराहट गुस्सा रहे. मैं सुन रहा हूँ यार. मैं सुन रहा हूँ बड़े आराम से. तो मेरा वोट मेरी ताकत में हमने Frontline SMS को यूज़ करना था. We went through, we used a resource. Bobby from Thailand was there. We used his resources, pulled his brains out because मैंने पहले भी काम किया उस पर. So we were able to see the limitations of what the software does. What happened was 60-50 people were able to see and be exposed and trained with projects कि भाई ये चीज़ इस तरह से manage कर सकते हैं. The fun part about all this के जो hosts थे were good. Were very liberal in the sense कि आपको whatever assistance you needed from outside also तो वो भी arrange करते थे. So अच्छा अब मेरे पास एक वही मैं देखा मैं बोले जा रहा हूँ आप मेरे पास 2 बड़े simple सवाल हैं मैं पूछना चाहता हूँ.
ठीक है, अगर आपको इतराज ना हो, क्योंकि आपको बहुत इतराज होता है, somebody has to ask these questions, ठीक है? बोलो यार, हाँ, तो बोल रहा हूँ मैं, पहले आपका वेट कर रहा था कि आप अपनी बकवास खत्म कर लें फिर मैं बोलूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ नंबर 1 कि देखें देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ सोशल इनोवेशन जो भी आए। एक तो ये ठीक है जो हुआ, वेरी गुड एफर्ट, एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स इट। सेकेंडली जो पाशा का इससे पहले हुआ था। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें कितना खर्चा होगा आपकी इनोवेशन लैब में अंदाजन? एक रैंडम फिगर, आई थिंक 10-12 लाख रुपए, इससे ऊपर ही हुआ होगा, क्योंकि आप जैसे चीतों को कहीं ठहराना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है? 60 लोग थे, आराम से 20 लाख रुपए खर्च हुए। 20 नहीं होता, चलो अच्छा चलो, जो भी हुआ, ठीक है, जो भी हुआ खर्चा हुआ होगा, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाशा वाला मॉडल बेहतर नहीं था, जब उसमें कोई खर्चा नहीं है, वो लोगों से प्रपोजल्स मांगते हैं इनोवेशन के, स्टार्टअप्स के, एंड देन दे प्रोवाइड द मनी to do those startups? Doesn't that actually translate into something more tangible on the ground? It can. Than a conference like this, जिसमें से I know the 7 initiatives are good, I read them. 4 तो मैंने पढ़े, ठीक है? अब मुझे सारे अच्छे लगे, मगर क्या वो पहले नहीं हुए हैं? क्या वो कोई नया आइडिया था? मुझे कोई नया आइडिया नजर नहीं आया। देखो, डोमेस्टिक अब्यूज बीन डन बाय 1000 NGOs, क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट बीन डन बाय 50-60, at least there are 50-60 NGOs working on the ground. Then आपका has been voting, आप खुद PTI के साथ कर रहे हैं very successfully, I can see it around me, to my distaste कर रहे हैं, ठीक है? नंबर 4 आपका डिस्टेस्ट क्या है कि आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ डिस्टेस्ट क्या है, वो that's another topic. नंबर 4 जो खैबर पख्तूनख्वा में rally people together for human rights, वो भी more or less I agree with you. देखो, एक तो पहले मैं address पाशा in this comparison. अच्छा, पाशा की कंपैरिजन में ये है कि पाशा is talking people who have the vision and the idea to be thinking of the projects and then be able to pitch it. अच्छा, that is a total different sphere altogether. But to get to that point, you need some training at sir. Okay, training to be exposed to different softwares. Example बताओ, तुम और मैं WordPress इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? And that WordPress was because we went through a process, Blogspot से गुजरे, जो simple situation, we learned how the process worked. I agree with the training part. We focus on the training part. That's what मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये पैसे खर्च करना viable है? आपको replicate the Pasha. रात को मैंने आपसे कहा था, आप 5 साल की उम्र के थे, आपके वालिद साहब ने क्यों सोचा आपको पढ़ाई कराएं? एक बच्चा, ये सब ग्रोन अप एडल्ट्स है। मुझे एक बात बताओ, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? let me talk to you about that. मैं बताऊं, एक इन्वेस्टमेंट इन द टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी टेंजिबल इन द सेंस कि पाशा के साथ ये चल रहा है, पाशा ने $10,000 दिए हर प्रोजेक्ट को। नहीं, मैं तो दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों सोशल इनोवेशन के ऊपर है ना। ये स्टेप जब एक बच्चा, ये बंदा एक लेगा तो ये इस स्टेप पे पहुंचे। पाशा आई बिलीव इज एट सेकंड और थर्ड स्टेप कि हम और आप प्रोजेक्ट्स पिच कर रहे थे पाशा को करने वाले, बट वो जो स्टेप है, दैट्स बिकॉज वी गॉन थ्रू दैट रट इन द साइकिल। इन एग्जांपल जो हमारा प्रोजेक्ट था, आई वाज एक्सपोज्ड टू उशाहिदी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, वी विल हैव 60 गुड, नॉट गुड बट 60 अवेयर पीपल ऑफ जिनको अगले हफ्ते पता भी नहीं होगा आपने क्या बात करी है। क्वाइट पॉसिबल। मैं भी बताऊं कि इफ यू टेक वन आयोटा ऑफ एनीथिंग बैक, कुछ दिमाग में रह जाए कि यू हैव गॉट 4 टूल्स टू यूज। कभी भी वो अपने काम में फ्रंटलाइन इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी काम में उशारी कर सकता है। अब आओ, ये जो 7-8 प्रोजेक्ट्स जो थे, अच्छा, यस, इनोवेशन डज नॉट हैपन ओवरनाइट, 3 दिन का। तो मेरा दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ये सस्टेन होंगे नहीं? ये पहले ये बताओ कि इनमें से कितने सस्टेनेबल हैं? देखो, ऑफ द 8 प्रोजेक्ट्स, आई ऑनेस्टली बिलीव 3 are different. यानी 8 में से 3. Yeah. यानी more than 65% of the resources wasted. No. To bring those people over there and train them. मैं बताऊं जब क्या होता है ये, and I share you my vision of why this should happen. You should actually keep on throwing people together and saying कि तुम और selflessly तुम बैठ के 7 लोगों में ये 10. But don't you think throwing people together should have a merit-based criteria? It can, it should. नहीं, it can क्या? देखो, अभी जो the selection criteria of कौन थे, if you have a look at the overall spectrum, there were 7 people in almost every group. There were 1 or 2 technologists, there were 1 or 2 bloggers, ठीक है? There was 1 or 2 marketeers. अच्छा, there was one जैसे sort of a person who had the vision to do a lot of stuff, because I noticed हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर था जो गाइडेंस दे रहा हो,
किसी चीज़ की ये चीज़ होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स मैच्योर्ड फ्रॉम दैट। बिकॉज़ ठीक है, तो ये जो तुम बोल रहे हो कि 3 प्रोजेक्ट्स वायबल हैं, हाँ, ठीक है, तो 8 में से 3 निकले, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं आर्गुमेंट वाला नहीं दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3 प्रोजेक्ट्स को आगे कैसे लेके जाएंगे, कोई फंड करेगा? अब ये हमें करना पड़ेगा। अब वी हैव टू फिगर आउट हाउ द लॉन्ग टर्म फंडिंग, बिकॉज़ हमारे सारे बिजनेस तो ये भी नहीं फिगर आउट नहीं, हमारे बिजनेस प्लान में ऑन आवर बिजनेस एंड द अदर्स आल्सो वी देखो तुम्हारा जो मेरी तुमसे बहस हो रही थी कल, वो इस बात पे हो रही थी, तुम्हारा बिजनेस प्लान was achieved with that company because you were there. Next show we'll talk about that, because we will have to talk about that. मैं वो बताऊं जो I've lost the train of thought. There is no train of thought. There is a train of thought. तो बताओ ना क्या, देखो वेंचर कैपिटलिस्ट है नहीं वहाँ पे, आप बोलो ढूंढेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। अच्छा आर्गुमेंट लेके बैठा आप वो बोले गन कर दी। अब वो पूछेंगे, अब मैं पूछता हूँ ना आपसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट तो थे नहीं। अच्छा हाँ, लॉन्ग टर्म। अब वो ढूंढेंगे। बिजनेस प्लान में ये था कि पहले तो हमने सोचा कि what was the idea, concept. Then we had a strategy on how to implement it. We implemented it to a certain degree, and we also had a future line of action. What we need, what our हमारी वोट, मेरा वोट मेरी ताकत did was कि we had about 13 NGOs and organizations that we need to talk to implement this further. To an extent, मैं वही बता रहा हूँ, जो हमारा project था was using an SMS. ठीक है, तो वो तो okay, I understand about your project. We have a future project. मगर जो बाकी लोग हैं, जो मतलब don't they need venture capitalists? बस कोई पीछे नहीं करेगा। अब क्या होगा, मैं वही बता रहा हूँ, through out of bounds what I and you are planning to do is through out of bounds we can identify 3 or 4 projects and have, अगर कराची based है, नहीं है तो Skype based हम नहीं, तो हम तो ठीक है, pitch करेंगे that does not mean, देखो this innovation lab don't you think innovation lab में कोई structure होना चाहिए था to pitch? This is why yes है, एक है कि पाशा वाला, इसलिए मुझे बेहतर लगा। इंटरन्यूज का एक असाइंड पर्सन है जिसने इंटरन्यूज एक आफ्ताब नाम का लड़का, he's a lawyer and he is actually going to pursue us as a group कि इसको implement कर, but that does not guarantee it's going to be. My question was the fact कि 3 दिन था, take it as training, take it as a fact that we made blunders, we made mistakes, we learned. हर एक से होते हैं उनको मसला, हर एक होता है, and उस पूरे प्रोसेस को ओवरऑल yes सक्सेस मॉडल देखा जाए, ये जरूर है कि जो इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इट माइट बी मॉडिफाइड विद टाइम, बट होना चाहिए। मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो 20 लाख या 15 लाख या 10 लाख रुपए खर्च हुए, they could have been used to sponsor. तुम जो 5 साल के बच्चे, तुम्हारे वाले साहब ने तुम पे इन्वेस्टमेंट किया तो 20 लाख के क्यों किया? There's a vision कि ये बच्चा जाके बेहतर होगा। वो ठीक है, मगर वो नहीं, ठीक है, वो भी तो बंदा ही है। वो 5 साल का बच्चा cannot be compared with grown adults who have nothing to do. There are lots of people there who are not related to technology or they didn't know what to do with it. ठीक है, बिल्कुल आपने बेसिक लोगों को उठाया भी है काफी, ठीक है, एंड यू आर ट्रेनिंग देम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बजाय ये है कि आप उनको 20 या 10 या 15 लाख रुपए खर्च करते, 3 जो कमेंडेबल प्रोजेक्ट्स थे उनको पैसे दे देते यार। अब ये तीन अगले साल, यस आप जैसे पाशा ने प्रपोजल लगाया, ये 3 अगर आप समझते हैं 3 are viable, 3 if the team leaders are visionary enough, they should be able to come in next time, अगर खुद इंशाल्लाह पाशा has it तो पाशा पे वीडियो पिच करे and get the funding। देखो अब the first step conceptualization है, second step is how to find the funding, that will happen। Let's wrap this show up. I think we've gone a little long, and this is Out of Bounds and Faisal Kapadia and Awab Alvi signing out। जो URL है नीचे चल रहा होगा, और दूसरा ये कि हमारे email address, please give us feedback, we would love feedback and suggestions for next show that you would like to have, and questions पूछते रहिए, questions पूछना बहुत जरूरी है, और if you want to come on the show बहुत जरूरी है, और if you want to come on the show give us feedback, और नीचे जरूर बताइए कि अवाब अलवी ने क्या क्या गलतियां की हैं और मैं क्या क्या सही बोलता हूँ। ये हाँ Out of Bounds।